Today I am going to teach you the chapter is political parties. In this chapter I will teach you about the national party. What is national party? Anybody know what is national party? Yes, tell me. So National Party is 6% vote in Lok Sabha or plus 4 seats in Lok Sabha. This party is called the National Party. Exactly. So sit down. I want to tell you that if you will get 6% vote plus 4 seats in Lok Sabha election, so you will be recognized the national party. So there are 6 national party in India like BJP, Congress Party, Trinamool Congress, TMC, okay, and CPI, Communist Party, CPIM, and BSP. Okay, so there are 6 national parties in India. अगर सपोज करिएगा अगर किसी को 4 सीट्स तो मिल गई लोकसभा सपोज करिएगा बीएसपी गॉट द मोर देन 4 सीट्स मिल गई बट बीएसपी पार्टी डिड नॉट गेट द 6% वोट इन लोकसभा इलेक्शन तो 4 स्टेट्स में कितने 4 स्टेट्स में इट इज मैंडेटरी कि यू विल गेट द 6% वोट्स जब आपकी स्टेट इलेक्शन होगी व्हेन स्टेट इलेक्शन विल बी कंडक्टेड लाइक उत्तर प्रदेश देखिए देयर आर एज यू नो दैट देयर आर 28 प्लस 8 सीट्स वो स्टेट्स देयर आर 28 स्टेट एंड 8 स्टेट इज अ यूनियन टेरिटरी अब 28 में से यू विल गेट द 6% वोट हो जाएंगे तो यू विल बिकम द नेशनल पार्टी तो मतलब दोनों में से एक चीज होनी चाहिए वन ऑप्शन लेकिन ये वाला ये जो लोकसभा में जो पार्टी 6% लेती है वो बड़ी पार्टी होती है अब आई वांट टू टेल यू अबाउट द कांग्रेस पार्टी we call it Indian National Congress Party when it was founded 1885 you must very good this party is founded in 1885 Congress Party is founded in 1885 it is a long back time it is who founded this party who founded So this party he was one of the most important founder. मतलब there are many founders. ऐसा भी हो सकता है कोई political parties बनाई जा रही है तो there may be more than one founder. भाई 2 लोगों ने मिलकर पार्टी बनाना लेकिन एक मेन होता है ही वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फाउंडर तो ये फाउंडेड बाय हुई थी AOU हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस पार्टी WC बनर्जी he was the president He was the first president of the Indian National Congress. Then after I want to tell you that when was hold the first Congress session? Anybody know? 1920. It is this party is established in 1885. जैसे कि you know that September 1920 it is a Congress session. Yes, sir. December 1920 it is a Congress session. तो first Congress session कहाँ हुआ था? Where was hold the first session? Bombay. और बॉम्बे के कौन प्रेसिडेंट बने थे? WC बनर्जी। कांग्रेस
Party, it is a very oldest party in India. You must have knowledge about that. Indian National Congress, it popularly known as the Congress Party. We commonly we don't say the Indian National Congress Party. We say only Congress Party. Congress. ठीक है, इसकी ये पॉपुलर है इस नेम से, कांग्रेस पार्टी नाम से. It supports secularism and welfare of weaker section and minorities. So, what is the ideology of the Congress Party? This party believes in secularism. Secularism and weaker section and minorities. It is the ideology of the Congress Party that we will promote the secularism in India. What is the meaning of secularism? Anybody know? Respect all culture. Yes, speak loudly. Respect all culture. Respect All culture. all cultures. The meaning of that term secularism, I want to explain this term secularism. In India, there is no official religion of the India. Congress or any party, no party will promote the any one religion. Every religion in the eyes of the constitution is equal. So Congress party will promote the secularism. He will not discriminate based on the religion, caste, community. So that is called secularism. We will say in Hindi secularism, dharm nirpeksh system. That is called secularism. He will support the weaker section. Yes. सर जो 1885 में कांग्रेस बनी थी सर ये पहले से नेशनल पार्टी में आई मतलब इसका ना कोई इलेक्शन ना 6% वोट. Very good. Yes, exactly good. देखो, it is a very oldest party. It was a one organization. It is a one institution. This party fought for the Indians independence. इस पार्टी ने इंडिया के जो भी इंडिपेंडेंस दिलाने में इस पार्टी ने बहुत लड़ाई लड़ी, फाइट की. In the starting, that was not a political party, but in the first time, the election was held in India 1950 and 51 सेशन में. पहले बहुत लॉन्ग प्रोसेस लग जाता था, तो फर्स्ट प्रोसेस ये हुआ. बट आपका रिकॉर्ड तो मानी जाएगा कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मकसद यही था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, एक प्रमोशन देना, एक इक्वलिटी को. तो दैट्स व्हाई इन द स्टार्टिंग दैट वाज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, दैट वाज वन ऑर्गेनाइजेशन. दिस वाज दैट वाज ओनली वन इंस्टीट्यूशन. बट व्हेन वाज इलेक्शन वाज कंडक्टेड, तो दैट पार्टी contest the election and hold the power. After winning the election, that party hold the power. So that's why, so this party promotes the weaker section, those who are the weaker section in the society, like that OBC, SC, ST, and in general those who are weak, they are not rich, they are not educated. So this party supported weaker section. This is the ideology of the Congress party, and this party also supported and support always the idea. This is the ideology of the Congress party. Minorities. What is minorities? Who are in less numbers. Like that, there are many religion, those who are minorities. Like that, Muslims, Christians, Buddhists, Jainism, Zoroastrianism, means Parsi. So these are the minorities. So he said that we will support the minorities. So here it is the ideology of the Congress party. So you should remember that point. And next point I am going to
teach about the Bharatiya Janata Party. What about? BJP. We called it Bharatiya Janata Party. It was founded in 1980. What about? BJP founded in 1980. It was founded by Atal Bihari Vajpayee. Atal Bihari Vajpayee. But this organization is going on. Yes. Sir, how is it the election are done in the past times? What is the method of election in the past time? In 1885 approx. In 1885, Bharatiya Janata, there was no system. Before, there was only Imperial Legislative Council. So only a few members can. Everybody don't have the adult suffrage. सभी को वोट डालने का राइट्स नहीं होता था। तो ये सिस्टम चलता था इलेक्शन में, लेकिन हमें 1947 बट ये 1980 इट इज नॉट अ बहुत ओल्ड टाइम की बात नहीं हो रही है। नहीं सर, वो सर कांग्रेस की बात करें, जैसे कि 1885 में हुई है, उसके अपोज में सर कोई पार्टी नहीं थी। 1885 में यस सर। और इलेक्शन तो आपके 1950s और 51 से स्टार्ट हुए। उससे पहले कोई पार्टी पॉलिटिकल इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, दैट वाज ओनली वन इंस्टीट्यूशन, वन ऑर्गेनाइजेशन। Sir, in 1950, Congress party was fighting against the Britishers. in 1950 there was only one party system in India. No, many party. There was many parties like Janasangh, Muslim League, and different parties. But Congress party was the one of the major party. वही पार्टी मेन थी। एक्चुअली जो होता है, जब किसी भी देश के लिए फाइट करता है, वही ज्यादातर कंटेस्ट जो है या होते हैं इलेक्शन, तो विनिंग भी उसकी होती है। तो इट वाज फाउंडेड इन रिवाइविंग द erstwhile भारतीय जनसंघ। पहले इस पार्टी का नाम जो था दैट वाज भारतीय जना 1955, बट इसको रिवाइव कर दिया गया। आफ्टर रिवाइविंग भारतीय जनसंघ इट बिकेम द भारतीय जनता पार्टी। इट वाज फाउंडेड बाय द अटल बिहारी वाजपेयी। इसकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो खत्म हो चुकी। और दिस पार्टी डज नॉट बिलीव इन सेक्युलरिज्म। Okay, this party don't believe in the conversion में believe नहीं करती कि no one should convert the religion। उसे अपना रिलीजन जो है कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी इंडिया का एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज, इट इज अ एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज। मतलब दिस पार्टी always wants to say that we should promote the ancient culture. What is the ancient culture of the India? We should promote that. We should promote the values what we get from the Vedas. Okay, मतलब this party especially believes in the one religion. तो जो भी कल्चर होता है, ancient culture जो था हमारा, जैसे कि we used to wear the dhoti kurta, we used to speak the Sanskrit language. So he want to promote that. he believes in that. You should remember that point.
ये सबसे फर्स्ट टाइम 1998 में इसकी गवर्नमेंट हुई था। 1998 में he formed the he got the power in many states. और what is the alliance group of the this party? National You NDA. It is the group name of this alliance. NDA means होता है National Democratic Alliance. तो you should remember that. तो ये ग्रुप का होता है मेंबर। तो इसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। तो जैसे कि जस्ट लाइक दैट इन बिहार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट चल रही है। जस्ट लाइक दैट नाउ ओके। तो ठीक है, जैसे बिहार में गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी प्लस जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी प्लस जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। तो इनकी मिक्स करके पार्टी चल रही है। तो ये इसकी ग्रुप के मेंबर हैं, किसके? एनडीए। अंडरस्टैंड? और कांग्रेस का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग कहते हैं यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इनके साथ जो पार्टियां होती हैं, समाजवादी पार्टी पहले रही है इनके साथ, तृणमूल कांग्रेस भी रही है। तो ये ग्रुप होता है यूपीए का, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। Then after I would like to teach about the GSP party. That is also national party. In the present time, BSP. In the present time, it is a national party, and this party in 2019 got the more than 6% vote and more than 4 seats. But he did not get the 4 seats in Lok Sabha election. He did only get the 0 seats in 2014. Okay. So this party is founded by the Kansi Ram. Who founded this party? Kansi Ram in 1984. As you know that this party is founded in 1984, and BJP party founded in 1980, and Congress party is founded in 1985. तो it is oldest, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपकी काफी न्यू पार्टी रही है। उसी दौरान की समाजवादी पार्टी, बट दैट इज समाजवादी पार्टी इज नॉट अ नेशनल पार्टी, इट इज नॉट अ नेशनल पार्टी। ओके। बीएसपी in 1984 under the leadership of Qasim seeks to represent the secure power for Bahujan Samaj, which include the Dalit, Adivasi, OBCs and religious minorities. तो जो he supports the Dalit, OBC, OBCs, ठीक है, Dalit, ओके, ST and minorities, इनकी जो आइडियोलॉजी है इसे कहते हैं बहुजन समाज, इसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड बहुजन समाज। बट ही लेफ्ट द जनरल को उन्होंने छोड़ दिया है, जिसमें ही प्रमोटेड, ही सेड दैट कि वी विल प्रमोट दिस ग्रुप, वी विल सपोर्ट especially these group because they are very weaker section in the society, like that Dalit, ठीक है, OBC, Dalit, who are Dalit? Lower caste, those who are the Dalits are called like that scheduled caste. What? Like many castes, just like Dohre,
जाटव, ठीक है, these are called the Dalits. And OBCs, other backward classes. What is OBCs? Like Yadav, Rajput, ठीक है, there are like that different, and there are many Muslims. Majority of the Muslims are OBCs. Left the general category, some like that Pathan, they are called the Sheikh Sayyid, they are the general. But except that majority of the Muslims are OBCs. As you know that the ST, scheduled tribes, those who are living in the forest type, Chhattisgarh, in many states, but especially Bastar is a very big district of the STs. And minorities, earlier I told that he supports the minorities, ठीक है, like the Muslim, Sikh, okay, Christian, Judaism, there are many religions, those are called the Dalits. So he said that we will represent and secure power for इनके लिए भैया हम ऐसा चाहेंगे कि ऐसी सरकार बने, इनका सबका साथ मिले और हम लोग इनका सपोर्ट करें, इनमें जॉब्स वगैरह में मजबूती मिलेगी। तो ये आपको I taught about the three parties like Indian National Congress Party, like Bharatiya Janata Party, like Bahujan Samajwadi Party, BSP. So you know that when it was founded. Thank you. Have a nice day.